Good morning, friends. Today we are studying the Hartley Oscillator. This Hartley Oscillator is this type is most common in LC oscillator, and the frequency range is beyond 100 kilohertz up to the few megahertz. Figure there is Hartley oscillator there. Here see, this is the Hartley oscillator is there. In this Hartley oscillator we have used emitter, common emitter transistor. See here, arrow is this outwards means emitter by emitter, common emitter amplifier. this here is R1 है, ये यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R4 है, यहाँ पे कैपेसिटर लगाया C लगाया पैरेलल में, यहाँ पे है R4 के बाद में RFC लगाया हुआ है, इंडक्टर RFC, यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे C2 कैपेसिटर है, यहाँ पे ये इंडक्टर है, इंडक्टर L1 है, L1 को दो ग्रुप में किया है उसने, L1 है L1 ये दो ग्रुप में, एक को दो में किया, कन्वर्ट किया है, बीच का टर्मिनल है वो ग्राउंड किया है, तो उसका दो पार्ट हो गए L1 के, L1A और L1A L1B, ऐसे दो पार्ट हो गए इसके। और ये सिटी कैपेसिटर है पैरेलल विद दिस इंडक्टर, ये सिटी कैपेसिटर पैरेलल इंडक्टर के पैरेलल में है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक्शन के लिए यहाँ पे इंडक्टर L2 लगाया हुआ है, ये आउटपुट वेव है, आउटपुट साइन वेव है, ठीक है। now in this circuit you can see transistor is connected in common emitter configuration because of its advantages। उसके क्या एडवांटेज है कॉमन इमीटर में लगाने के? मॉडरेट इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस, उसका इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस मॉडरेट है। सेकंड, वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन इज ग्रेटर देन 1। इट शुड बी 1 और ग्रेटर देन 1, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1, ओके। Phase inversion between input and output occurs in this configuration। Phase inversion between this input and output occurs in this configuration। इनपुट और आउटपुट में बीच में फेज इन्वर्शन होता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट, मैंने बोला था फेज इन्वर्शन, वो होता है इसमें। Thus the lower terminal of, now we can see, suppose tapped coil divides the coil L1A into tapped coil divides the coil L1 into two parts, L1A and L1B, ठीक है। This type of coil is called as split tank inductor और tapped inductor। इसको क्या बेटे स्प्लिट टैंक, इसको क्या बोलते हैं स्प्लिट टैंक इंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं स्प्लिट टैंक इंडक्टर और स्प्लिट टैप्ड इंडक्टर। Split inductor serves the three important functions। This split inductor has three important functions। इसको स्प्लिट कॉइल को क्या बोलेंगे अपन? स्प्लिट टैंक इंडक्टर और टैप्ड इंडक्टर। इसको स्प्लिट टैंक इंडक्टर और टैप्ड इंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। दिस स्प्लिट टैंक इंडक्टर हैविंग थ्री फंक्शंस, उसके तीन फंक्शन है। स्प्लिट टैंक इंडक्टर ऑफ थ्री फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन, इट प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक टू द एक्टिव डिवाइस। इट प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। ये जो यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे से यहाँ पे जा रहा, अंदर बेस को जा रहा, इसको क्या बोलेंगे अपन? फीडबैक। ये जो फीडबैक है पॉजिटिव फीडबैक है। फीडबैक में दो टाइप रहती है, मैंने बोला था आपको, पढ़ाया था
feedback, negative feedback and positive feedback. This is the positive feedback. This is given to input base. ठीक है. So we are studying split inductor. So the three important functions. First function, it provides positive feedback to the active device. Positive feedback to active device. Active device means transistor is active device. So it is called active device. Observe the polarity shown in the circuit diagram. You can see the polarity shown in circuit diagram. Suppose polarity of the base is negative. It is inverted at collector by 180 degree. Suppose see the polarity of, suppose this is base is to the negative, then it will be 180 degree फेज उसको आउटपुट में कलेक्टर में मिलेगा अपन को, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. दैट इज ड्यू टू टैप्ड इंडक्टर. किसकी वजह से हो रहा, टैप्ड इंडक्टर की वजह से हो रहा हो. Thus lower terminal of L1B is negative. उसका L1B का लोअर टर्मिनल नेगेटिव है. दिस L1B का नेगेटिव लोअर टर्मिनल नेगेटिव है. सपोज ये नेगेटिव गया तो यहाँ पे बेस को फीड करेंगे सिग्नल, तो ये सिग्नल फीड करेंगे तो उस पे कलेक्टर को उसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे लेंगी. मैंने आपको पढ़ाया था जब बेस पे नहीं हुआ, ट्रांजिस्टर क्या करता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है. तो वन सपोज जो साइकिल ऐसी हो तो उसकी अपोजिट साइकिल ऐसी आ जाएंगी. ये निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव आ जाएंगे. ठीक है, आउटपुट में पॉजिटिव आ जाएंगे. दिस इज इन फेज विथ इनपुट, दस पॉजिटिव फीडबैक मीन्स इट इज फेज विथ इनपुट. Input means base, thus positive feedback बोलते हैं इसको. This feedback is fed across base and emitter. Since tapped and emitters are at ground, it is known as shunt feedback oscillator. Together with the second important function, split inductor serve करता है second important function. Together with the CT फॉर्म्स रेजोनेंट टैंक सर्किट. ये जो स्प्लिट इंडक्टर है और ये सीटी है, ये टैंक सर्किट प्रोड्यूस करे. इसको क्या बोलेंगे, टैंक सर्किट. कैपेसिटर इन पैरेलल विद इंडक्टर. मैंने कल के दिन आपको पढ़ाया था टैंक सर्किट. तो ये टैंक सर्किट का वैसे बताया था, वैसे ही ये टैंक सर्किट वर्क करेंगे. ये टैंक सर्किट यहाँ पे दिया है, ये पॉजिटिव फीडबैक को लगाया अपन ने, यहाँ पे आउटपुट को लगाया है, आउटपुट से सिग्नल जाएगा फिर ये इनपुट को जाएगा, तो इसको बोलेंगे फीडबैक नेटवर्क. और ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा. ठीक है, इसको टैंक सर्किट बोलेंगे. सिटी पैरेलल विद दिस L1, दिस कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक. नहीं सॉरी दिस इज कॉल्ड एज टैंक सर्किट. सिटी पैरेलल विद इंडक्टर, सिटी पैरेलल विद द L1, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक. सॉरी, टैंक सर्किट इज कॉल्ड एज टैंक सर्किट. Together with this CT and this inductor.